We would basically first, I'll just go over a quick recap of the processes that we've studied so far because today हम लोग सारी yields की बात करेंगे and the significance of the coenzymes. So to connect all of that into one picture, let's just quickly recap all the four processes that we've studied so far. अच्छा, so हम सबसे पहले किससे start करते हैं? We start with glycolysis. Now when we are starting with glycolysis, we have glucose, which is converted into fructose, 1,6 bisphosphate. Can you guys tell me at this point what do we require for this first step? Right. So two ATPs are converted into ADPs for the process of phosphorylation to take place. Then this fructose 1,6 bisphosphate splits into triose phosphate, and each triose phosphate then produces two ATPs and reduced NADs are produced from oxidized NADs. Now, हमारे पास what essentially happens over here is the triose phosphate has phosphate groups. These phosphate groups are basically donated to ADPs to form ATP. So what basically happens is that this, let's say, is our triose sugar and it has the phosphate group. Now this phosphate group is added with ATP to form the product and ATP. Now if you observe, this is our substrate. ये हमारा substrate है and this substrate has a phosphate group. This substrate contains a phosphate group which it would donate to ADP, and once the ADP accepts this phosphate group, it becomes ATP. So essentially over here, the ATP that is coming from the substrate, which was triose phosphate. So when ATP is formed from a substrate, that type of ATP synthesis is known as substrate linked reaction or substrate linked phosphorylation. तो व्हेन हमारे पास केमी ऑस्मोसिस की एब्सेंस में हमारे पास एटीपी प्रोड्यूस हो रहा होता है, दैट एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलिसिस एज वेल एज इन क्रेब साइकिल. तो हमारे पास क्रेब साइकिल में और glycolysis में when the ATP is being produced in the absence of the chemiosmosis or in the absence of the proton gradient, that sort of ATP synthesis is known as substrate linked phosphorylation because ADP यहाँ पर phosphorylate होकर. Phosphorylation is what? Phosphorylation is the addition of phosphate group. ADP is getting a phosphate group from a substrate. So it is being phosphorylated by a substrate, and therefore such ATP synthesis is known as substrate-linked phosphorylation. Now, ये हमारे पास glycolysis का process था. Then we went towards link reaction. And link reaction में these 2 moles of pyruvate entered, and yeah, it is also called substrate linked reaction, yes. But majorly for your syllabus, because phosphorylation के concepts आपने पढ़ा था, so you can call it substrate linked phosphorylation, SLP बुलाता.
Rahima, we're just recapping all the reactions at the moment. Then pyruvate basically undergoes decarboxylation to form the acetyl group. और यहाँ पे हमारे पास डिहाइड्रोजनेशन भी हो रही होती है जिसमें हमारे पास 2 NAD प्लस फॉर्म NADH. ठीक है. So we have again reduced NADH being produced in this step as well. And then हमारे पास this acetyl combines with acetyl, it combines with coenzyme A to form acetyl CoA. Now हमारे पास फिर पूरा Krebs cycle आ जाता है. Krebs cycle में we start with oxaloacetate. Oxaloacetate से combine होता है हमारा acetyl CoA to form citrate. This is 4 carbon, this is 2 carbon, this is 6 carbon. This citrate then forms the 5 carbon compound. And for that to happen, we have decarboxylation taking place, as well as NAD plus is being reduced to NADH. Then we go back to form the oxaloacetate, and during that process, obviously हमारे पास decarboxylation हो रही होती है. We have 2 moles of NAD plus being converted to 2 NADH. We have FADH2 being formed. And हमारे पास यहाँ पर भी substrate-linked phosphorylation हो रही होती है. So this is our Krebs cycle. Now yesterday we basically studied oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation में क्या होता है कि हमारे पास जितनी भी अब तक हमारी total yield होती है 2 FADH2s and we have 10 NADH being produced. These are what? Can you guys tell me कि ये हमारे पास इनको हमने क्या term दी थी? What are these called as? The reduced FAD and the reduced NAD? Coenzyme. They are coenzymes, but they have a particular role in the entire respiration process. They are the protons and the electrons carrier. Proton and electron carriers. Now, हमारे पास we have our mitochondria, जिसकी ये inner membrane होती है. इस inner membrane में we have protein complexes and we have the stopped particle. Stopped particle का जो head होता है that is the enzyme ATP synthase and the tail of the stopped particle is essentially a channel protein that carries hydrogen ions. This is the matrix and this is the intermembrane space. हमारे पास जो NADH और FADH2 प्रोड्यूस हुए होते हैं as a result of glycolysis, a link reaction, Krebs cycle, these NADH and these FADH2, they are what? They're the protons and electron carriers. हमारे पास the NADH basically gets oxidized into NAD plus, oxidized NAD, and hydrogen atom. This hydrogen atom splits into electrons and the hydrogen ion. This electron then enters the first protein complex. Then it jumps into the second, third, and fourth ETC complex. ठीक है. हमारे पास फिर एक और reduced NADH आएगा, एक और reduced NADH oxidize होगा, electrons में split होगा. This first complex needs to be empty. What do I mean by empty? कि ये वाला electron जब इसमें jump करके चला जाएगा तो हमारे पास जब available space होगी तभी दूसरा electron can enter this complex one. What causes it to oxidize? हमारे पास जो ये first protein complex होता है ना यहाँ पर हमारे पास ये oxidation हो रही होती है. There is a reaction that is taking place. That reaction is not part of the syllabus. But this first protein complex is basically responsible for this oxidation to take place. So हमारे पास जो first complex होता है वो oxidation करा रहा होता है NADH की.
नाउ जब ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स में स्प्लिट कर जाएगा हाइड्रोजन एटम एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन एटीसी कॉम्प्लेक्स टू द अदर एटीसी कॉम्प्लेक्स एंड इन दिस जंपिंग प्रोसेस दे आर रिलीजिंग एनर्जी। वो जो एनर्जी होती है दैट एनर्जी इज यूज्ड टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हाइड्रोजन आयंस इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, जिसकी वजह से हमारे पास प्रोटॉन ग्रेडियंट या प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होती है। These hydrogen ions cannot directly diffuse through the inner membrane. ये directly diffuse back नहीं कर सकते। Intermembrane space से वापस matrix में these protons cannot directly diffuse. They need a facilitator, they need a transport protein for that. उसके लिए हमारे पास जो ये stocked particle होता है, that is a channel protein for these hydrogen ions. Now, these hydrogen ions are moving from an area of higher hydrogen ion concentration to an area of lower hydrogen ion concentration. This movement from high to low is known as chemiosmosis. When the hydrogen ion moves from a high concentration gradient to a lower concentration gradient. Now, when this chemiosmosis takes place, when these hydrogen ions are moving through the channel protein, the ATP synthase or the stocked particle can rotate. And when this rotation occurs, हमारे पास the ADP is converted to ATP. सही है? So chemiosmosis होगा. Chemiosmosis is what? It is basically when the hydrogen ions are moving down the electrochemical gradient. I think so. There is a question in chat. Let me see that. Yes, in the intermembrane space, there are more hydrogen ions, and in the matrix, there are less hydrogen ions. तो हमारे पास तभी chemi osmosis होगा. Now, हमारे पास this final electron needs to move. Why does this final electron needs to move out of this ETC? ताकि हमारे पास जो बाकी electrons हैं वो भी jump कर सकें. हमारे पास जो ये जंपिंग का प्रोसेस है फ्रॉम वन ईटीसी कॉम्प्लेक्स टू अनदर ईटीसी कॉम्प्लेक्स इट हैज टू बी कंटिन्यूअस। अगर इस प्रोसेस को कंटिन्यूअस रहना है तो डेफिनेटली ये जो इलेक्ट्रॉन है इट कैन नॉट स्टे इन द फोर्थ कॉम्प्लेक्स, इट हैज टू गो समवेयर, इट हैज टू मेक द स्पेस क्लियर फॉर द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन टू कम। फॉर दैट हमारे पास ऑक्सीजन कम्स, मोलेकुलर ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ कर रहे होते हैं, जो हम व्हेन वी आर टेकिंग इन ऑक्सीजन, दैट मोलेकुलर ऑक्सीजन कम्स एंड इट एक्ट्स एज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये ना सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है बल्कि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ये दो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। सो ऑक्सीजन कंबाइंस विद टू हाइड्रोजन आयंस, टू इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म वन मोल ऑफ वाटर। The significance of oxygen being the terminal electron acceptor is for the ETC movement to be continued. Because अगर मेरे पास ETC ब्लॉक हो जाएगा, ETC की जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाएगी, सो मेरे पास जो ये NADH है ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। जब NADH ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स वो नॉट एंटर द electron transport chain. If the electron transport chain is blocked, हमारे पास movement नहीं हो रही electrons की from one protein complex to another. If that movement is not occurring, no energy is lost. And if there is no energy present, तो हमारे पास active transport नहीं होगा. What's the box of the knee transport chain called? These are basically protein complexes. Yes, Rahima. Yes, Mutahar, do you have a question? Okay, I'll repeat the last statement. अभी तक ऑक्सीजन की जो ये वाली इक्वेशन थी यहां तक क्लियर है, राइट? परफेक्ट। ओके, जो ये वाली बात है, लेट्स डू इट अगेन। वी ऑल नो कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, व्हेन दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स टू अनदर, तब हमारे पास एनर्जी लूज हो रही होती है। ये बात सबको क्लियर है? So the electrons need to be moving from one ETC complex to another for the energy to be lost. Now, अगर मेरे पास let's say ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है ही नहीं बॉडी में, ठीक है, या ऑक्सीजन कम है, there is no oxygen to accept the final electron, तो मेरे पास जो ये चेन है, जो ये ETC है, वो ब्लॉक हो जाएगी, यानी कि
मेरा ये वाला इलेक्ट्रॉन उस वक्त तक जंप कर नहीं सकता जब तक कि ये आगे ना बढ़ जाए, और ये वाला तब तक इसमें नहीं आ सकता जब तक ये ऑक्सीजन उसको एक्सेप्ट ना कर ले. डू यू ऑल अंडरस्टैंड दैट द जंपिंग नीड्स टू बी कंटिन्यूअस, एंड फॉर दैट जंपिंग टू बी कंटिन्यूअस we need oxygen to accept the electron in the fourth complex. Is that clear to all? Now, let's say we do not have this oxygen. Oxygen नहीं है. If there is no oxygen, मेरे electrons क्या आगे move कर पाएंगे? Would they be easier to jump from one protein complex to another if there is no oxygen present? Okay, Mishal is saying no. What about the rest? What are you guys saying? अगर oxygen नहीं है, ये oxygen आकर final electron को accept नहीं करी, तो क्या हमारे पास this movement, can this occur? This cannot occur, right? You all understand that this movement would not take place? Exactly, very good. Now, if the electrons are unable to jump from one protein complex to another, jumping ho hi nahi- yes, exactly, Raima, because the protein complexes are full and there is no oxygen to accept this electron, there is no movement that is taking place. Because there is no movement taking place, मेरे पास jump ही नहीं कर पा रहे, so क्या कोई energy release होगी? Would there be any release of energy? There would be no energy that is released. If there is no energy, would my hydrogen ions move actively? They would not be able to move actively क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स से जो एनर्जी लूज हो रही थी उस एनर्जी को यूज करते हुए हम अपने प्रोटॉन्स को पंप कर रहे थे एक्टिवली बिकॉज देर इज नो एनर्जी प्रेजेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ईटीसी. हमारे पास ईटीसी ब्लॉक हो गया है, ईटीसी ब्लॉक हो गया है तो एनर्जी लूज नहीं हो रही. एनर्जी जब लॉस नहीं हो रही तो हमारे पास द protons cannot be pumped. If the protons are not pumped, हमारे पास proton gradient नहीं बनेगा. Proton gradient जब fully नहीं बनेगा तो हमारे पास chemiosmosis नहीं होगा. Chemiosmosis नहीं होगा तो हमारे पास oxidative phosphorylation नहीं होगी जिसकी वजह से हमारे पास ADP to ATP conversion नहीं होगी. Now is this clear to all? Yes, Rima is correct. We need three hydrogen ions to pass through the stocked particle for the production of one ATP. But this is not part of your syllabus. You do not need to know how many protons are required for ATP synthesis. What was oxidative phosphorylation? हमारे पास ये जो पूरा process, Mishal, can you tell me what do you understand by the term phosphorylation? What is phosphorylation? Yes, Raima, you got it right. Because there is no oxygen to accept electrons, so oxidation is stopped. Oxidation is stopped because the protein complexes are full. Absolutely correct. Okay, Michelle, coming to your question, phosphorylation का मतलब क्या होता है? Phosphorylation का मतलब होता है addition of phosphate group. सही है? Now, हमारे पास can you tell me यहाँ पर जब ADP ATP बन रहा है तो क्या मेरे पास ये phosphorylation हो रही है? ADP के ऊपर एक phosphate group add हो रहा है? Can I call this stage as the phosphorylation stage? Very good. ये जो पूरा ये हमारे पास बिल्कुल एंड में हुआ ना जब हमारे पास NADH ऑक्सीडाइज हुआ. NADH ऑक्सीडाइज होने के बाद हाइड्रोजन एटम बना. हाइड्रोजन एटम स्प्लिट हुआ इनटू प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. दोज इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली जम्प फ्रॉम वन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स टू अनदर losing their energy. That energy was used to actively pump hydrogen ions from the matrix to the intermembrane space. Once the hydrogen ions were concentrated in the intermembrane space, they had to move down the electrochemical gradient. They cannot directly move. Direct diffusion नहीं हो सकती. So they have to move through this stocked particle. When they move through this stocked particle, that movement causes phosphorylation. That movement causes ATP synthesis. Is that correct, Mishal? Do you agree? कि NADH जब तक ऑक्सीडाइज नहीं होगा हमारे पास ये पूरा प्रोसेस नहीं होगा, और जब तक ये पूरा प्रोसेस नहीं होगा तब तक हमारे पास एंड में फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी. So essentially this entire phosphorylation is starting with oxidation of NADH. Do you agree? ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है. Yes, because it requires oxygen and because it requires oxidation. That is why it's called oxidative phosphorylation. Is this clear to all?
Oxidative phosphorylation is basically the synthesis of ATP in the presence of the proton gradient. वो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता ही तब है जब हमारे पास NADH ऑक्सीडाइज होगा, बिकॉज NADH इज कैरिंग द प्रोटॉन। जब तक कि NADH अपने उस प्रोटॉन को रिलीज नहीं करेगा, हमारे पास प्रोटॉन ग्रेडियंट ही नहीं बनेगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं बनेगा, केमियोस्मोसिस नहीं होगा। केमियोस्मोसिस नहीं होगा तो फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी। ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द चैट टू सी इफ देयर आर एनी मोर क्वेश्चंस। Okay, what was substrate-linked phosphorylation? Musfa, just give me a minute. मैं अभी फिर से explain करती हूँ. How do protons initially go to the intermembrane space? हमारे पास जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलर की मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनमें चैनल प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। नॉर्मली जैसे मेम्ब्रेन्स में हमारे पास मूवमेंट होती है प्रोटॉन्स की, बिल्कुल उसी तरह से मूवमेंट होती है। ठीक है, करेक्ट। अच्छा मुस्फिरा, नाउ टू आंसर योर क्वेश्चन, लुक एट ग्लाइकोलिसिस। ये हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है, राइट? इन ग्लाइकोलिसिस हमारे पास क्या होता है? हमारे पास जो ये वाला स्टेप होता है, ट्रायोस फॉस्फेट। अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि ट्रायोस फॉस्फेट इज बेसिकली 3 कार्बन शुगर which has a phosphate group. Do you recall that? राइट। मेरे पास होता क्या है, जब हमारे पास ट्रायोस फॉस्फेट कन्वर्ट होती है इनटू पायरोवेट। पायरोवेट इज ऑल्सो अ 3 कार्बन शुगर, but this 3 कार्बन sugar does not have the phosphate group. So definitely ये phosphate कहीं गया होगा. This phosphate group basically goes and attaches to an ATP to form ATP. So can I say कि मेरे पास जो triose phosphate है, that was the substrate, and मेरे पास एक product बना. That product is what? Pyruvate. And during this conversion of the substrate into a product, मेरे पास substrate ने अपना phosphate group ADP को दे दिया in order to form the product. So the substrate, because it has a phosphate group and it is donating its phosphate group to the ADP, we call this substrate-linked phosphorylation. Is this clear, Muspira? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ऑक्सीडेशन की वजह से, केमियोस्मोसिस की वजह से, प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से फॉस्फोराइलेशन होती है, एटीपी सिंथेसिस होता है। Substrate linked phosphorylation में basically we have a substrate which has the phosphate group. It has to give away its phosphate group. It needs to get rid of its phosphate group. So it gives that phosphate group to an ADP. When a substrate is giving away its phosphate group to ADP to synthesize ATP, that is basically substrate linked phosphorylation. Yes, in glycolysis and Krebs cycle, we are making ATP through substrate linked phosphorylation. Oxidative phosphorylation खाली हमारा जो फोर्थ स्टेप होता है उसमें हो रही होती है। सही है? आर वी ऑल क्लियर ऑन दिस? ये पिक्चर क्लियर हो गई फुल उसकी, क्या कहते हैं? परफेक्ट। अच्छा, ना हमारे पास, हम जल्दी से यील्ड्स पे बात कर लेते हैं। एक NADH का मॉलिक्यूल थ्योरेटिकली 3 ATPs बनाने में कंट्रीब्यूट करता है, और एक FADH2 का मॉलिक्यूल थ्योरेटिकली 2 moles ऑफ ATP बनाने में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, हमने एड ऑन किया था कि हमारे पास ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, इन सब में कितने NADs और FADs बन रहे थे? NADH हमारे पास बन रहे थे 2 NADs in glycolysis, 2 NADs in the link reaction, 6 NADH हम बना रहे थे in the Krebs cycle. So this totals to 10 NADH. And FADH2 हम खाली Krebs cycle में बना रहे होते हैं, which are basically 2. सो थ्योरेटिकल यील्ड हमारी क्या होनी चाहिए? थ्योरेटिकल यील्ड हमारी होनी चाहिए 10 into 3 equals to 30 ATP, and 2 into 2 equals to 4 ATP. 34 ATP हम बनाएंगे फ्रॉम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि NADH, FADH2 ये सारे ऑक्सीडाइज होंगे और फिर पूरी हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की साइकिल बनेगी। सो इस तरह से these 10 NADH and 2 FADH2 theoretically should produce 34 ATP. हमने केमिस्ट्री पढ़ी हुई और हमें पता है कि थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड हमेशा डिफर करती हैं।
क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं एनर्जी लूज हो रही होती है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अभी तो हमने स्टैब्लिश किया था कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जंप हो रहे होंगे तो हमारे पास उनकी जो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही होगी, दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स from sorry to move the protons from the matrix into the intermembrane space. तो क्वेश्चन इज कि जब वो एनर्जी हम यूटिलाइज कर रहे हैं इन द मूवमेंट, तो एनर्जी लॉस किस पॉइंट पर हो रहा है? सो हमारे पास ऑलवेज रिमेंबर हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी की फॉर्म में थोड़ी बहुत एनर्जी लूज हो रही होती है। सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर जंपिंग, यस, उनकी मेजॉरिटी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स from the matrix into the intermembrane space. But some energy is lost in the form of heat energy, जिसकी वजह से हमारे पास थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी आएगी। और उस डिस्क्रिपेंसी की वजह से, उस डिफरेंस की वजह से एक्चुअल यील्ड जो होती है उसमें एक NADH से हम लोग 2.5 मोल्स ऑफ ATP बना रहे होते हैं, और FeDH2 से हम लोग 1.5 ATP बना रहे होते हैं। तो हमारी फिर अब क्या टोटल यील्ड बनेगी? दिस वुड बिकम 10 into 2.5, 25 ATP, and 2 into 1.5, 3 ATP. This becomes 28 ATP. If this question arises, okay, why is there a difference between the actual yield and the theoretical yield? You would say that some energy is lost in the form of heat energy, जिसकी वजह से हमारे पास ये difference आ रहा होता है. Is this difference clear to all of you? This is the theoretical yield. This is the actual yield. About net ATP produced in each step. Could you please repeat it in a summarized form? ये मैंने खाली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात की मुताबिक, ठीक है। अब हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है? 34। एक्चुअल यील्ड कितनी है? 28। मैं इस थ्योरेटिकल यील्ड में ऐड कर देती हूँ अपने ग्लाइकोलिसिस के नेट एटीपी, मेरे पास 2 थे, एंड हमने क्या कहते हैं क्रेब्स साइकिल में भी 2 ATP प्रोड्यूस करे थे, राइट? सो 2 ATP फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस and 2 ATP from Krebs cycle. So this becomes what? 34 plus 4, 38 ATPs. And over here, if I add those 4, this becomes 32 ATP. Are we all clear on this? On this entire theoretical yield and actual yield. Perfect. Why are we doing this? Because हमें ये बताना होता है, हमारा एक एलो है, ये सवाल ऐसे आएगा, what is the difference between theoretically we are getting 38 and actual we are getting 32. The question is, आपका एक एलो है, let me show you that एलो. um, where is the Edo bio plan? See over here, explain why the energy yield from respiration in aerobic condition is much greater than the energy yield from respiration in anaerobic condition. A detailed account of the total yield of ATP from the aerobic respiration of glucose is not expected. But over here आपको वो numbers expect नहीं करते, but आपको comparison देना होगा. So ये पूरा chart बना के वो आपसे नहीं पूछेंगे, but you would have to give an overall numbers. ठीक है? अभी हम सब कंपैरिजन करेंगे ना एनारोबिक का और एरोबिक का। आई एम जस्ट गोना स्टार्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड। सो यू वुड सी कि हमारे पास कितना डिफरेंस होता है एटीपी के मोल्स में। दैट डिफरेंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू गाइस। ठीक है।